the term catalysis. Catalysis. So what is meant by catalysis? It has been observed that the rates of many chemical reactions can be altered by the mere presence of a foreign substance. For example, if we have a reaction A plus B gives C, A and B are reactants here, C is the product. So if we add X to this reaction mixture, X, so X is here a foreign substance. What this X do? It accelerates, it increases the rate of this reaction, it alters the rate of this reaction. इस रिएक्शन की रेट ऑल्टर करता है. अब बर्जीलस जो है, बर्जीलियस जो था in 1835, he suggested name for these foreign substances. He suggested a name catalyst. उसने इन foreign substance का नाम रख दिया catalyst. यानी जो ये फॉरेन सबस्टेंस ऑल्टर करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, बर्जीलियस ने पहली बार इन 1835 सजेस्ट किया नेम इनके लिए, कैटलिस्ट नेम रखा उन्होंने. सो a substance which increases the rate of the chemical reaction without itself being used up in the reaction is known as catalyst. अब हम catalyst को कैसे define करेंगे? It is actually a foreign substance which increase the rate of the reaction without itself being used up. यानी खुद ये यूज नहीं होता रिएक्शन में, सिर्फ ये करता है रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज. सो ऐसे सबस्टेंस को हमने बोला, बर्जीलियस ने पहली बार नाम दिया उसको, इसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट बोलते हैं इस सबस्टेंस को. एंड द प्रोसेस is known as catalysis. So in short we can say that a foreign substance which increases the rate of a chemical reaction without itself being used up is known as catalyst, and the process is known as catalysis. एंड प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटालिसिस. सो ये कैटलिस्ट क्या करता है एक्चुअली? इट प्रोवाइड्स हाउ इट स्पीड्स अप द रेट ऑफ द रिएक्शन. सो इट स्पीड्स अप द रेट ऑफ द रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग एन alternative path of lower activation energy. इसका ये मतलब है it actually decreases its presence actually decreases the activation energy of a particular reaction. So it speeds the reaction rate by providing an alternate path of lower activation energy. So low activation energy means fast reaction. So now we have an example. If I will take the example of this decomposition of potassium chlorate, So decomposition of potassium chlorate takes place at low temperature in presence of MnO2 as catalyst. बिल्कुल हमें टेम्परेचर चाहिए कि लो टेम्परेचर पे इसकी डिकम्पोजिशन होती है. अगर हम MnO2 इसमें डाल देंगे, so MnO2 here it speeds up the decomposition. Decomposition speed up करता है. So therefore it acts here as a catalyst. यहाँ पर ये catalyst करता है act. So we get KCl plus O2. हमें मिलता है KCl plus O2. So this is यहाँ पर जो MnO2 है, this is catalyst. यहाँ पर इसका role है as catalyst. Actually we have now two types of catalysis हमारे पास है. दो किस्म की catalysis है. Number one is homogeneous catalysis. Number second is heterogeneous catalysis. First of all, we'll take homogeneous catalysis.
So what is actually homogeneous catalysis? Homogeneous catalysis is may be defined as the catalysis in which the reactants is catalysis may it may be defined as a catalysis in which the reactants, products, and the catalyst are in the same phase, that means they have same state, gas, लिक्विड और सॉलिड, यानी सबों का एक ही स्टेट है, यानी रिएक्टेंट्स का, प्रोडक्ट्स का और कैटलिस्ट का एक ही स्टेट है, उनका एक ही फेज है, they have the same phase, therefore such a catalysis is known as homogeneous catalysis. For example of ले सकते हैं पर oxidation of sulfur dioxide oxygen sulfur dioxide in presence of nitrogen oxide in the lead chamber process. ये lead chamber process में हम करते हैं, एक process है lead chamber process. So we'll go to an example here. This is SO2, ये sulfur dioxide gas है plus oxygen, इसको हम oxidation करते हैं, oxygen is also a gas. So in presence of NO, ये catalyst है, it is also a gas. So we get SO3, it is also a gas, it is a product. So this reaction is an example of homogeneous catalysis. All the species involved here are present in gaseous phase, यानी reactants भी gaseous phase में है, products भी gaseous phase में है, और जो यहाँ पर हमें मिला, जो हमें हमारा catalyst है, that is also in gas phase, वो भी gas phase में है. We will take one more example, hydrolysis of ethyl acetate. Ethyl acetate की hydrolysis in presence of acid, in acidic hydrolysis. In hydrolysis of ethyl acetate in presence of acid. So we'll take here, this is CH3, CO, this is ethyl acetate, liquid state में है, प्लस ये H पाई एसिड है, एसिड यानी H पॉजिटिव, ये एसिड, ये भी लिक्विड स्टेट में, लिक्विड में है ये, इसको हाइड्रोलाइज करते हैं प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस, ये वाटर है लिक्विड, इथाइल एसिड प्लस वाटर, ये एसिड, विल गेट CH3COH प्लस C2H5OH. हमें मिलेगा यहाँ पर एसिटिक एसिड एंड ये मिलेगा इथेनॉल, ये भी लिक्विड फॉर्म में है. सो दिस इज द reaction which provides the example of homogeneous catalysis, because both the reactants as well as products and catalyst, they are in liquid phase. So this is homogeneous catalysis. अब यहाँ पर as per the modern view, in this catalyst, how the catalyst, जो catalyst होता है, catalyst ये कैसे increase करता है rate of the reaction, how it increase the rate of the reaction. Actually, as per the modern view, the catalyst enters into the combination with one or more of the reactants. यहाँ पर catalyst इंटर करता है, ये कंबाइन होता है या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स के साथ कंबाइन होता है टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट, फिर बनाता है वहां पर इंटरमीडिएट कंपाउंड. दैट इंटरमीडिएट कंपाउंड डिकम्पोजेस, बीइंग हैविंग हाई एनर्जी, सो इट डिकम्पोजेस, ये डिकम्पोज होता है और कंबाइन्स विद वन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू produce the product, and catalyst is regenerated.
So this was about homogeneous catalyst. Now heterogeneous catalysis. So what is heterogeneous catalysis? Here in this catalysis, the reactants, the products and the catalyst are in different phases. यानी इसमें heterogeneous में क्या होता है, यहाँ पर जो reactants होते हैं, reactants, product and the catalyst, they have different phases. They are present in different phases. So heterogeneous catalysis may be defined as a catalysis in which the reactants, the products and the catalyst have different phases. So we'll take an example. यहाँ पर हम करेंगे example. We'll take manufacture of ammonia. Manufacture of ammonia in Haber's process. So Haber's process में हम करते हैं manufacture ammonia. We take nitrogen, it is a gas. We take hydrogen, it is a gas. Here we use iron, it is a solid as catalyst. So we'll get ammonia, NH3. It is also a gas. 2 times. So यहाँ पर reactants और products और catalyst का different phase है. यहाँ पर reactants और products gas form है और catalyst यहाँ पर solid form है. So it is an example of heterogeneous catalysis. Heterogeneous catalysis का example है. We will take one more, oxidation of sulfur dioxide in presence of palladium metal. So we will take here, this is sulfur dioxide. It is a gas plus oxygen. It is a gas in presence of palladium. Palladium is a metal, so we will get sulfur dioxide. So here it provides the example of heterogeneous catalysis because catalyst and the reactants are in different phases. We'll also take an example. We have vegetable oil. Vegetable oil ये liquid है. इसको हम करते हैं हाइड्रोजनेशन. इट इज ए गैस, हाइड्रोजन जो गैस है इन प्रेजेंस ऑफ निकल. निकल तो मेटल है, इट इज ए सॉलिड. सो विल गेट वेजिटेबल घी. हमें मिलेगी वेजिटेबल घी, इट इज ए सॉलिड. ये सॉलिड है. सो यहाँ पर भी हम देखेंगे, यहाँ पर बिल्कुल लिक्विड, यहाँ पर रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और कैटलिस्ट का डिफरेंट फेज है. They exist in different status or different phases. So therefore it provides the example of a heterogeneous catalysis. So this was about catalysis and just types. So catalysis and just types. So we have 2 types of catalysis, homogeneous and heterogeneous catalysis. Okay.